Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Merit Hub. এটা হচ্ছে थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो 1000 MCQ का सीरीज चल रहा है उसका फिफ्थ लेक्चर है. ओके, क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो impels A. Negligible heat flow, B. No difference of temperature, C. Uniform rate in temperature between, C. Constant heat flow rate. Steady flow is the constant heat flow rate is the answer D. Next question, the point function of a thermodynamic system describe the equilibrium state of that system irrespective of how the system arrived at that state. Which of the following is not an example of point function? Temperature, heat, density, pressure. Heat is not a point function, heat is a path function. Friends, next question, a closed thermodynamic system is defined as, यानी closed system को define कैसे करोगे? A. The system in which both mass and energy can transfer to the surrounding. तो नहीं है. The system in which only mass can be transferred the surrounding but energy remains constant. ये भी नहीं होगा. The system in which only energy can transfer to surrounding but mass remains constant. Yes, this is right. Option C is the answer. Energy ट्रांसफर हो सकता है बट मास ट्रांसफर नहीं होगा इस क्लोज सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन thermodynamics when mass as well as the energy are not allowed to cross the boundary such a system is known as, कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास नहीं ट्रांसफर होगा वो सिस्टम को कैसा सिस्टम होगा? क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम. कंट्रोल रूम तो नहीं होगा. आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी मास और एनर्जी नहीं ट्रांसफर होता है. Next question, the thermodynamic state of a simple compressible system is completely specified. Two independent extensive property, two independent intensive property, C. Only independent extensive properties, only independent intensive properties. B is the answer, two independent intensive properties. Next question friends, the constant volume specific heats in compressible substance depend on. फ्रेंड्स बोल रहा है जो कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर इनकम्प्रेसिबल फूड सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एंट्रोपी पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज A. Constant volume process, B. Constant pressure process, C. Constant enthalpy process, D. Constant temperature process. Free expansion, constant enthalpy process, free expansion. Friends, next question, a process in which the temperature of the working substance remains constant during expansion or compression is called. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस है. यस, बी इज द आंसर, आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग the definition of specific heat? A. The amount of heat required the temperature of a unit mass of a substance per degree centigrade. B. Force per unit area. C. Rate of transfer of heat. D. The rate of transfer of heat per unit difference in temperature per unit length. A is the answer because we know the specific heat C equal to Q heat by mass, unit mass into change in temperature. जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके थर्मल इंजीनियरिंग का प्ले लिस्ट है उसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हो, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप लोगों को. एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मल रिजर्वायर इज रिनाउंड फॉर ए स्मॉल हीट कैपेसिटी, लार्ज हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, लार्ज वर्क कैपेसिटी. रिजर्वायर जो होता है वो इनफाइनाइट कैपेसिटी में होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी.
Friends, the next question: heat and work in a thermodynamically system are. They are the path function. B is the answer. Next question: which of the following instrument is employed to record the small amount of a current with a high frequency? A. Induction. B. Thermocouple. C. Permanent magnetic moving coil type ammeter. D. Dynamometer. Friends, B. Thermocouple. Thermocouple is used to use small amount of the current with a high frequency. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन टीएस डायग्राम, एक टीएस डायग्राम है, क्या बोल रहा है देखो, स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री स्टीम at the atmospheric pressure due to the addition of the heat can be represented by the temperature is constant. Okay, then this is the horizontal line. देखा, ऑप्शन सी इज द आंसर, horizontal line. फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स is a point function is always given by the PDV. Integration of PDV is a function of the pressure only depends on the path followed by the system. Work transfer is the path followed by the system, work and the heat. Next question, friends, consider the following properties: temperature, viscosity, specific entropy, thermal conductivity. Which of the above properties of the system is intensive property? Friends, what is the intensive property? Intensive property वो property है जो independent of the mass or the space और mass के ऊपर depend नहीं करता है. Temperature is independent property. Okay. Viscosity जो है, it is also intensive property. Specific entropy भी intensive property. Thermal conductivity भी intensive property. So D is the answer. 1, 2 and 3, 4. Friends, next question देखो, the absolute temperature scale needs only one fixed point, which is the A. normal body temperature, B. boiling point of water, C. the melting point of ice, D. the triple point of water. D. the triple point of water. Friends, can you tell me the what is the temperature of the triple point and the pressure of the triple point? If you can, please answer in the comment or the chat box. Next question, the state of a simple compressible system is completely specified by how many independent intensive properties? A. 2. Next question, friends, in a system is in thermodynamics equilibrium. थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होना के लिए केमिकल और मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तीनों में ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए. ऑप्शन ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की का बेसिस में ही मेजरमेंट का जो डिफरेंस होता है वो होता है. ऑप्शन ए इज द आंसर. आप लोग कमेंट में जनाना फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या पाते हैं एंड सेकंड लॉ से क्या मिलता है, किसका कॉन्सेप्ट मिलता है, एंड ऑल्सो थर्ड लॉ से कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है बताना. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 10th General Conference on the weight and the measures in the 1954, the reference point temperature is chosen for the Kelvin scale. Freezing point of water, boiling point of water, critical point of water, triple point of water. D. triple point of water. इसमें आप लोग बोलना है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है. Friends, next question, when two bodies are in the thermal equilibrium with the third body, they are also in the thermal equilibrium each other. This statement is called the zeroth law of the thermodynamics. is the answer. ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.